हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन सोप इन साइंस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। सोप की डेफिनेशन सिंपल सी मैंने मार्क कर रखी है। द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, बट व्हाट इज द trick is just write the spelling. Soap, this means sodium, and P is the symbol for potassium, and you have to remember these are salts of long chain carboxylic acids. So soap itself tell you about its ingredients. Okay, so this is how you can remember this trick. Soap, So sodium, symbol is you can say Na. Okay. A and P stands for potassium salts. Okay, the ionic end of the soap interact with the water, while carbon chain interact with the oil. It means एक एंड किससे इंटरेक्ट करता है? वाटर से। जो वाटर से इंटरेक्ट करता है दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको हम वाटर लविंग भी बोल देते हैं। एंड कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। अगर ऑयल से इंटरेक्ट करता है तो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता, so that's why you can say जो कार्बन चेन वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक। क्योंकि हमें पता है फोबिया स्टैंड्स फॉर फियर, डर। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर।